अली भाई स्पीकर। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं सेहत से जुड़े उन तमाम मसाइल पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अक्सर हम किसी सिम्टम को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी हर सिग्नल एक इम्पॉर्टेंट साइन देती है। इसीलिए हेल्थ और हम में हम एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उससे बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पेन्स एंड स्टिफनेस के बारे में। कभी कभी सुबह उठते ही बॉडी में स्टिफनेस महसूस होती है, कभी गर्दन और कंधों में दर्द होता है, तो कभी कमर, हाथों या पैरों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर हम इसे थकान, ज़्यादा काम या गलत पोस्चर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या हर बॉडी पेन सिर्फ थकान की वजह से होता है? कभी कभी हमारा जिस्म कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल भी दे रहा होता है। आज हम समझेंगे कि बॉडी पेन्स और स्टिफनेस के पीछे आमतौर पर क्या वजह हो सकती है और किन सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किस वक्त डॉक्टर से मशवरा ज़रूर होना चाहिए। इस अहम टॉपिक पर हमें सही से गाइड करने हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जेमकेयर पोलोमी हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साई हरी प्रेम। हेलो सर। Hello everyone. Hi Hafsa, how are you? I'm doing good. How are you? I'm good, thank you. Thanks for having me here. You're most welcome. Yeah. तो बॉडी पेन एंड स्टिफनेस जो हमारा आज का टॉपिक है, इट्स कंसिडर्ड रियली कॉमन दीज डेज एंड स्पेशली ये ओल्डर पीपल में ज़्यादा कॉमन माना जाता है। बट आजकल हम देखते हैं कि एवरीबडी आर हैविंग बॉडी पेन्स। हर किसी को ऐसा होता है कि कंप्लेन कि मुझे बॉडी पेन्स है, प्लस सुबह उठते ही स्टिफनेस महसूस होती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्टिफनेस एंड बॉडी पेन्स है, ये इतनी कॉमनली हर किसी में आजकल नज़र आ रही है? Absolutely, you're right. Firstly, speaking, body pain is a very vague thing to ask, and body pain is actually a symptom. It's not per se a disease, and you have many more. बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बॉडी पेन्स आने के लिए। अगर हम लोग को बुखार भी आए तो ना हमको बॉडी पेन्स आएगा, एंड कभी कभी काशी ये भी है। समटाइम्स यू कॉफ, sometimes you develop body pains. That is right. Because there are many factors for body pain. So body pains per se एक बहुत वेग चीज है पूछने के लिए, बट इट इज नॉट अ डिसीज per se. It is related to many kind of ailments, many kind of musculoskeletal ailments and other constitutional symptoms के हिसाब से बॉडी पेन्स आएगा। एंड स्टिफनेस इट इज बिकॉज ऑफ बहुत सारे आर्थराइटिस चीज रहते हैं जैसे उसके वजह से, एंड मोस्ट पोस्ट ट्रोमेटिक रीजंस लाइक अभी किसी को फ्रैक्चर्स हुए होंगे, उन लोग ठीक से फिजियोथेरेपी ना करने के वजह से उन लोगों को स्टिफनेस आने का चांसेस रहता है। और बहुत रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस भी रहते हैं जहाँ पे जोड़ों का बीमारी रहता और गठिया बोलते हैं उनको बेसिकली। सो उन पेशेंट्स में अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करने से उन लोग को स्टिफनेस, दे डेवलप स्टिफनेस and they are not identified also. Sometimes timely identification of the disease is also not it doesn't take place, and उसके वजह से भी उन लोगों को stiffness I mean उन लोगों को the disease progression will lead to joint deformities and stiffness. Right. जैसे आपने बताया है कि body pains and stiffness एक प्रॉपर डिजीज नहीं है, बट अगर वो it's like a symptom, it's a sign and a symptom. कुछ क्रूशियल होने से पहले। Yes, exactly. अभी यहाँ पे एग्जैक्टली कब नॉर्मल एंड स्पेशली क्रिटिकल, अगर यहाँ पे डिफरेंस हम समझे तो अक्सर क्या होता है कि आजकल कॉर्पोरेट भी ऐसे हैं जिनको बॉडी पेन्स का बहुत रेगुलर बेसिस पर होता है। तो कब बॉडी पेन्स को एक नॉर्मल साइन कंसिडर कर सकते हैं एंड कब बॉडी पेन्स को सीरियसली लेना चाहिए? So like usually I said in my first sentence में आपको जैसा बोला, बुखार आने से भी कभी कभी हम लोगों को बॉडी पेन्स रहते हैं। So that is understood that ये बुखार आया है, तो बुखार आने के बाद कभी कभी थोड़े लोगों को बॉडी पेन, जनरलाइज्ड वीकनेस आता है, कभी कभी थोड़े लोगों को ज्यादा देर वॉमिटिंग्स होके डिहाइड्रेशन में जाके दे हैव जनरलाइज्ड वीकनेस एंड बॉडी पेन्स। वो कॉमन चीज है, बट व्हेन इट परसिस्ट एंड ऑन द लॉन्गर रन इफ दे कीप कंटिन्यूइंग टू हैव द सेम सिम्टम्स, then you have to take it seriously. कभी कभी थोड़े लोगों को वायरल फीवर आने के बाद भी they develop viral arthralgias. Arthralgia means pain in the joints. जी. Pain in the joint. Arthritis is the disease and arthralgia is a pain in the joint. So you cannot say every joint pain is arthritis. Okay. So viral arthralgias. So they slowly after viral fever, these symptoms they persist after 3 to 4 months as well.
So it will take time to subside. So then that is when we have to start identifying, is it because of the fever, or is it because of any other disease, is it because, or maybe has he or she developed any kind of immunological disorder. So all these things, or is it age related arthritis है क्या, वो भी पूरा देखना पड़ेगा हम लोगों को. And is it, are they developing any kind of these kind of pains due to age related changes, और थोड़े लोग ज़्यादा fatigue के वजह से भी they develop muscle cramps and kind of body pains. So eventually sequentially you have to identify the प्रॉब्लम. अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की हम आगे बात करेंगे इन डिटेल, बट उससे पहले ये कंप्लेन भी कई सारी लोगों की होती है कि बॉडी पेन्स या स्टिफनेस अक्सर उन लोगों में दिखता है जिनको इंजरी हुई है पास्ट में, बट सॉर्ट ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि विदाउट एनी इंजरी भी नेक, नी, बैक, ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पेन करते हैं. Addressing the first question that you asked me about the traumatic reasons, yes, after trauma, especially fractures or any kind of soft tissue injuries as well, like ligament injuries or muscle or tendon injuries, tendon tears. So ये पूरे होने के बाद भी, like you know, for prolonged immobilization होने के बाद they develop stiffness. And when there is an intra-articular fractures, means fractures around the joints, so usually they develop early arthritis. So there's always a high chance of developing early arthritis. So we always suggest, we try to mobilize the patient as early as possible, leaving some amount of time that we actually immobilize for the fracture to unite. But as early as possible, we try to immobilize the patient in order to not develop any kind of stiffness. That means अगर trauma है, that in case of people who develop trauma or any kind of musculoskeletal injuries. Okay, so but coming to your second question that you were asking me about neck stiffness or back stiffness, so these are early morning, usually people complain about early morning stiffness. So this is basically signs of inflammatory arthritis. So inflammatory arthralgias usually in kind of in kind of these conditions like rheumatological conditions like rheumatoid arthritis and or ankylosing spondylitis. These are inflammatory arthritis. In these conditions, the patients or people, they usually complain about early morning stiffness, which actually lasts for about 30 to 60 minutes, and with activity it improves. मतलब जितना मूवमेंट होगा, जितना एक्टिविटी होगा, it improves. But it is a sign saying that, you know, it is an inflammatory condition rather than a mechanical condition. So, you know, usually you develop these kind of mechanical back pains or whatever it is also by doing too much of activity. Overuse and abuse will also cause back pain or neck pain or whatever it is, or poor posture, sitting for prolonged periods, and operating phones and system works, and it can also cause back pain and neck pain and any other shoulder girdle pain. So there is a difference. There is always a way to delineate. Like I said, if there is an early morning stiffness, it's more towards inflammatory symptoms. It is mostly an inflammatory condition. But when it is because of prolonged activity, वो mechanical condition के वजह से, like how ज़्यादा काम करने के वजह से, ज़्यादा वजन उठाने के वजह से, या कुछ एक posture अच्छा नहीं है तो ज़्यादा देर बैठ के, नहीं तो ज़्यादा देर खड़ के, वैसे है तो उन लोगों को भी डेवलप कर सकते हैं. जी. So you have to know how to differentiate the cause and the causality of the condition. ये बहुत important बात आपने कही है कि difference मालूम होना है. Exactly. So when it is early in the morning and it is stiffness, you have stiffness in the morning, बहुत gut महसूस कर रहे बोले तो ये mostly it's towards inflammatory conditions. But again youngsters में especially हम लोग देखते हैं, जो लोग laborers रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं या system operators रहते हैं, बहुत देर के लिए बैठे हुए रहते हैं, उन लोगों को ना they develop this mechanical back pain. They don't have any kind of any other clinical features, like, you know, usually people with disc problem and everything, they have some associated symptoms as well, like severe disc problems. They develop tingling and numbness in their lower limb, बोले तो झुंझुनाहट महसूस करना, सुनपना महसूस करना, जो भी रहने दो वो, और पैर खींचना, ये पूरा बहुत रहता है. We see a lot of people coming into my OP speaking about low back ache and saying that, you know, हमारे को पैर खींच रहा और नहीं तो सुनपना महसूस होना, ये पूरा बहुत ज़्यादा रहता है. So you have to know which is inflammatory, which is mechanical, which is because of the disc conditions. So ये है, mechanical back pain is only restricted to the
back, and sometimes if it continues and if they continue to abuse it over and over, they develop even back issues like PIVD, like I said, disc problem जो भी है in layman language. That means in short, अगर छोटे से पेन को भी हम इग्नोर करेंगे, that can result to a very big consequences in future. Yes, timely management is very important. Timely identification and management is crucial in anything, be it a fever, be it a pain, be it anything. Timely identification is very very important. Yes. अभी सबसे मेजर चीज़ ये है कि जैसा बिगिनिंग में आपने कहा है कि नॉट एवरी पेन इज आर्थराइटिस, बट येस सम पेन्स कैन रिलेटेड टू आर्थराइटिस पेन. अब यहाँ पे पेन जब होता है, अक्सर क्या होता है कि during the busy pain in the joint, like I want to correct you again, I'm sorry to interrupt, but see, the pain in the joint is you called as arthralgia, and that can sometimes, if there is a possible good etiological factor, वो arthritis को lead कर सकता है, but not every pain is arthritis. Because you have muscle pains, that is not arthritis. But in rheumatological conditions, में rheumatological conditions में क्या होता है बोले तो ये हमेशा जोड़ों को ही आने का जरूरी नहीं है. So क्या है कि it can even affect your muscles. अक्सर वहीं से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. That's known as polymyalgia rheumatica. So a condition known as polymyalgia rheumatica, even it can affect your muscles as well. So हाँ, यही डिफरेंस लोग नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एक्चुअल में मसल पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है. तो पहले तो एज एन एक्सपर्ट, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप हमें ये बताइए कि जॉइंट्स का जो पेन होता है, स्पेशली ट्रॉमा से जो लोग गुजरते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पैर, नी, ऐसे एरियाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, एंड जो लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़े टेयर होने के चांसेस होते हैं. तो जो ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी लिगामेंट टेयर हुआ है, क्या उनमें भी चांसेस है इन फ्यूचर आर्थराइटिस आने के या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आने के जो स्टार्टिंग में बहुत माइल्ड लगते हैं बट आगे चल के क्रूशियल हो जाते हैं? Absolutely, yeah. So the early degenerative arthritis is possible, but not the rheumatoid arthritis, or that is completely immunological. But they can develop the early degenerative arthritis, that is like due to secondary reasons like trauma and etc. यहाँ पे अगर एक चीज हम देखेंगे तो एज फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे, तो एज के रिलेटेड अगर किसी को आर्थराइटिस आ रहा है या समझिए साइंस आ रहे हैं जॉइंट पेन्स वगैरह के, तो क्या ये उस एज में भी पॉसिबल है जो आज कॉर्पोरेट लाइफ में लड़के लड़कियां काम करते हैं, वेयर दे आर ऑफ अर्ली 20s एंड 25s, इनमें भी ये कंप्लेन होता है बहुत बार कि हमें ज़्यादा देर बैठने से ना जो जॉइंट्स हैं हमारे वो पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज कि जो सिटिंग पोजिशन होता है 8-8 घंटे 12-12 घंटे जो बैठते हैं, उसमें उनकी नीज जो है वो एकदम से स्टिफ हो जाती है. तो क्या इस वजह से भी जो अर्ली आर्थराइटिस आपने कहा है वो आने के चांसेस है? I don't really think so. See, posture can cause pains but not arthritis. Okay, so yeah, so posture, I mean to say that the posture that you're questioning about, like the sitting for prolonged periods, you're saying, I don't really think that is possible. So yeah. But definitely they will have some joint pains if you're sitting for prolonged period. You're bound to develop some knee pains or back pain, that is for sure, or neck pain. Yeah. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटोआर्थराइटिस आपने बताया है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उस बारे में आप कुछ बताइए. So osteoarthritis is basically age-related arthritis, and it is either, so you have again primary and secondary. One is because of because of age relation, and then second one is because of traumatic reasons. So you develop arthritis, early arthritis, and rheumatological is completely an immunological disorder. Okay, it is a chronic immunological disorder, and in rheumatoid arthritis, so I'll try to emphasize, because we keep listening a lot about osteoarthritis but very less about rheumatoid arthritis, and people are not aware of it, and we need to make them aware. So the thing is, in rheumatoid arthritis is basically our body, we have immune system. We have something called as immune system that fights against the antigens. I mean the foreign antigens. Okay, so foreign antigens are something you have an infection for instance. For instance, there is a foreign antigen which is causing the so-called. I'm trying to be a layman and trying to explain you. Okay, so the thing is, you develop an infection. There is always a foreign antigen. So the immune system in your body basically fights against that. So I'm trying to convey this to the layman, so who can understand this. And the thing is, when but in these kind of immunological conditions, the body fails to recognize its own antigens and antibodies, and they form antibodies against the own cells, and they target the what you call the normal cells that are present in the body.
Okay. Okay, so that is the reason why you develop these kind of immunological conditions when you fail to identify the bad antigens. Okay, and if, the bad cells that have entered in the body, you fail to identify that, and you target the what you call the native that is already in the body. You target the good cells in your body. When you fail to identify that, when the body fails to recognize what is good and what is bad, and they start attacking the good cells, that is when you develop these kind of immunological disorders. Okay. So this is an inflammatory and most it is a chronic inflammatory condition. Done. Got Okay, so and when it comes to osteoarthritis is age related again. Okay, it is something it's not completely preventable. So you can only thing is what you can do is you can stop the progress. Yes. Yeah. नाउ स्पीकिंग अबाउट द ओवरवेट, तो जैसे आपने बताया है कि अगर कोई ज़्यादा ओवरवेट है, फैटीग है, तो उनमें भी ये बॉडी पेन्स एंड स्टिफनेस जो है वो कॉमनली नजर आती है, एंड आर्थराइटिस के चांसेस भी उनमें ज़्यादा होते हैं. आई एम सॉरी, कैन यू कम अगेन प्लीज? टॉकिंग अबाउट द ओवरवेट पीपल, तो ओवरवेट जो होते हैं, क्या उनमें बिकॉज ऑफ वेट आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स ज्यादा होने के चांसेस? Definitely, yeah. See, with obesity at a point, at any age group is very bad, because with increasing age, your bone quality also keeps depreciating. So and it keeps the bone quality of the bone also deteriorates. So the body fails to bear the weight of the bones fails to bear the weight of the body. So and eventually you develop arthritis. जी. Yes. What they think usually is, अगर हम एक्सरसाइजेस की बजाय वॉकिंग करेंगे तो वॉकिंग से ही हमारे बॉडी में जो है एक्टिव सेल्स जनरेट होंगे, एंड दैट विल हेल्प अस रिकवर द पेन और एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द बॉडी. तो इज इट एक्चुअली ट्रू कि walking is very good? So it's a very good exercise. I mean, it's a very good activity to keep your knees very healthy. Okay, and but the thing is, for walking per se is not enough. You need to do a few exercises which actually even strengthen the muscles around your knee joint. If we are talking about osteoarthritis of the knee, then that's what I'm trying to tell is you have to strengthen the muscles around the knee, because even your muscles also play a crucial role in supporting the bone to bear your weight. So and you have to improve the bone quality, you have to increase the strength in your muscles, and including that you have to do some walking. And with age there is always some amount of damage to your knee that is already, so it is actually the bones that actually form the knee, they are lined by cartilage, so they basically get eroded with age and with abuse. So see the thing, so those things are irreversible. Yes. So for that to keep, and there is always a lubricant in between this, so it's something called as hyaluronic acid. So hyaluronic acid we have, sodium hyaluronic. So that thing is it is very important. So that lubricant also it gets depleted inside. So in order to keep that, in order to keep your knee joint healthy and like free and mobile, you need to do these exercises and walking. That will help your knee. जी. Yes. Now what happens when people detect pain in their joints, especially जिनको ये पता होता है कि उनके joint में pains है, and doctor asks them to not do more of physical work or something, क्या करते हैं कि exercises भी छोड़ देते हैं. So as an expert, do you think कि अगर joints no, that is not at all right. See, pain is actually a symptom. So it is actually giving you an indication that your joint is getting deteriorated, or there is say some joint damage happening to the joint, and just because if you stop your activity it will cause more stiffness. The more you try to become sedentary, the more you develop stiffness, and that is not good for your especially your knee joints or any other joint per se. It is not good. You should always try to keep your joints free and active. जी. Yeah. अभी क्या होता है कि कभी कभी जब लोग बैठे हुए होते हैं, they hear some crackling and clicking sounds in their bones. So is that normal, या ये normal consider नहीं किया जाता है? So I will not per se say that it is normal or abnormal. Usually what actually happens is see, it is the grating sensation that you're talking about. We call it as crepitus. Okay, so that happens when there is a friction between when there is a damage in the articular cartilage, and then there is a loss of the lubricant that I was talking about in your knee joint, and that when that is depleted, there is a friction between the two bones, and it causes some kind of crackling noise in your it means that there is a damage to the cartilage, articular cartilage. So that is when you have to start addressing the problem.
and you have to do a good amount of physiotherapy, and what you call walking is very important. Now what usually people think is अगर सर्दी का मौसम आया या बारिश का मौसम आया तो जो ट्रॉमास थे पास्ट के बोन ट्रॉमास वो और ज़्यादा उभर कर आते हैं इस सीजन में. सो इज इट रियली ट्रू और इज इट जस्ट अ मिथ? ऐसा नहीं बोल सकते, ये completely myth है. Few people experience more pains during the winter seasons. It is quite natural. But ऐसा नहीं है कि काली सीजन में आपको दर्द ज़्यादा बढ़ेगा. If you don't keep your joints free, if you don't exercise, again like I said, if you don't try to do the active, if you don't try to keep your joints active, then you are bound to have pains and stiffness. So that is very, very, very important. So yeah. When it comes to bone health, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वुमेन को दी जाती है बिकॉज वुमेन स्टार्ट लूजिंग देयर कैल्शियम कैपेसिटी एट द एज ऑफ 30. तो आफ्टर 40 जब ये बोन हेल्थ की बात होती है स्पेशली वुमेन में, तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू कीप देयर बोन हेल्थ? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली. क्या है बोले तो इन वुमेन स्पेशली आफ्टर एट अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, सो यूजुअली वंस दे स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग द थिंग इज एस्ट्रोजन विल कम हो जाएगा. एंड इन मेनी वुमेन व्हाट आई सी ऑन अ डे टू डे बेसिस इज दैट they get a hysterectomy done at a very early age, or because of some uterine problems or whatever. So once they go into in these kind of in circumstances, the thing is they develop early osteoporosis. So that is the quality of the bone has come down. So the thing is they develop bone pains. So in such patients it is very important to identify at a very early stage if the quality of the bone, and address the issue by giving calcium supplements or vitamin D supplements and any other sometimes if severe osteoporosis can also cause pathological fractures. So you have to addressing osteoporosis is very, very, very important. Yes. Like giving you many other like injections like teriparatide and many other things that actually help you in improving the quality of the bone. Yes. So that is very important. So in women per se especially, it is very, very post-menopausal women, it is very important, and they will also lead to pathological fractures, especially in your vertebrae, that is like your spinal bone. Yes. And the bones at the back, and even the femur neck fractures, neck of the femur, like your hip, near the hip. So even trivial trauma can also cause fractures. Now if we are going to talk about people who self treat themselves, तो अक्सर एक कैटेगरी ऐसी देखते हैं हम जिनमें अगर बॉडी पेन्स या बोन पेन स्टार्ट हो गए तो दे डिपेंड ऑन पेन किलर्स. तो क्या बोन पेन्स के लिए ऐसे पेन किलर्स सेल्फ मेडिकेशंस जो होती हैं वो लेना सेफ है या नहीं? See, I don't know why people usually think pain as a bad indicator, but let me tell you, pain is a signal. It is body is trying to signal us, saying that you need to go to the doctor, consult, and take some treatment for something that is happening for the pathogenesis that is actually happening in your body or your joint, wherever the pain is. So it is an indicator. It is a signal that the body is giving us. So usually what people do is they go to the pharmacy and they take an over-the-counter pain medication and they try to manage it. So, but ideally I say if it persists for more than a week or so, it is important for us to go to the doctor. एक time doctor को जाना है बहुत important है. Yeah. अब सबसे एंड में, सबसे आखिर में, what would be that one take home message for you of you to the people who are watching you, especially when it comes to body pain and stiffness, which shouldn't be taken lightly? So मैं ऐसा ये बोलना चाह रहा हूँ कि the thing is important is see osteoarthritis और rheumatoid arthritis और बहुत other rheumatological conditions है जहाँ पे joint pains आते रहते रहेंगे, and ये rheumatological conditions especially joints को ही involve नहीं करते, they even involve many other internal organs as well. So it is very important to differentiate between osteoarthritis and pain because of degenerative reasons like your old age or age related reasons, and this chronic inflammatory and immunological conditions like rheumatological conditions. So because हम सोचते खाली जोड़ों को आया, but on a later date it might even affect your internal organs. So बहुत सारे ऐसे diseases है like rheumatoid arthritis भी रहने दो, और it can be SLE or it can be Sjogren syndrome or mixed connective tissue disorders. These are many things, especially MCTD, where it involves many other multiple organs as well. So ये बहुत सारे चीज़ें which can be only identified on timely consulting the doctor
concerned doctor. If you, it is very important. And second important thing is, you know, we should always stay active, and there are many precautions that we have supposed to take. I always keep telling my patients on a very day-to-day basis, just taking a painkiller will not help you, and you have to do some physiotherapy and make yourself very active. And at the same time, taking precautions is very important, like not climbing the stairs, sitting on the floor or squatting. All these things are not recommended. It is always better to, like, you know, maintain good posture and follow precautions if you want to have a very good joint or good knee joint or good any other joint, whatever it is. Yes. Yeah. So I would like to thank you so much for joining us today and sharing this information. I think जो common problem ये दिखती है and जितनी lightly लोग इसको लेते हैं, I hope कि आज का हमारा जो ये episode and information that you have shared, I think people will start getting aware about it and they'll start to take action rather than ignorance. So thank you so much for sharing this information with us and being here with us today. Thanks for having me. You're most welcome. Yeah. नाज़रीन, बॉडी पेन और स्टिफनेस को हमेशा सिर्फ थकान समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए. कभी कभी ये हमारी लाइफस्टाइल, पोस्चर या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है और कभी किसी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकता है. इसीलिए अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना और ज़रूरत पड़ने पर वक्त पर डॉक्टर से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है. उम्मीद है आज का ये जो हमारा डिस्कशन था उससे आपको बॉडी पेन और स्टिफनेस को बेहतर समझने में मदद मिली होगी. आप देख रहे थे हेल्थ और हम, और मैं आपसे आपकी मेज़बान हफ्सा खान आपसे लेती हूँ इजाज़त. अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक और नए मौजू के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ.